Excel or CRM, which one gives better control in business? If you are starting now, then Excel. And if you are growing, like when you hire a sales team for one or two people, you should shift to Hmm. CRM. Okay. One tech Yes. tool every student should master. I would say Google Sheet and ChatGPT. Hmm. WhatsApp or email, which one gives better engagement? WhatsApp gives you better engagement, and email gives you security. Okay, cool. Yes. One book or YouTube channel that changed your mindset. So I have read a book called there's a book called Rich Dad Poor Dad. So that book Hmm. taught me about business, why to do business, and if anyone is planning to go for business, Rich Dad Poor Dad is the must-read book. And at the anything, if not for business, for jobs as well, if you're planning, Rich Dad Poor Hmm. Dad will taught you how to manage your finance. Hmm. And if you said YouTube channel, so there's a podcaster called Raj Mami. So Hmm. Raj Hmm. Mami make podcast on business, business persons. Hmm. So that is must watch. Good. Business degree or self-learning, which helped more in your journey? I would say self learning. मेरे case में self learning is more important. Hmm. And so when you do the self learning, you do a lot of research. And when you do some course, some training हम लेते हैं काफी सारी lot of या when you do you're doing some graduation. So this is like कुछ past experience के बेस पे हमें लर्निंग मिलती है, एंड जो कि हमें नहीं पता होता कि इम्प्लीमेंट कैसे होगी. व्हेन वी डू सेल्फ लर्निंग, सो वी नो कि इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, या इफ यू आर स्टकिंग समवेयर तो कहाँ से हेल्प लेनी है. सो इन माय Okay. केस सेल्फ लर्निंग प्लेज अ की रोल. Okay. Innovation or execution, which do you think drives more impact in a tech product? सो एग्जीक्यूशन गोज पैरेलल हैंड टू हैंड, एंड सो इनोवेशन एग्जीक्यूशन दोनों ही पैरेलल चलती हैं. इफ यू डू ओनली इनोवेशन, आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, सो इट मीन्स कि आप एक Hmm. प्रोडक्ट बना रहे हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहे हो, एंड वो मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहे हो. सो इनोवेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों होनी चाहिए पैरेलली. UI or UX, if you had to pick one to focus on first, which would it be and why? यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स. UX. And why? सो एक्सपीरियंस इज समथिंग, कोई भी किसी भी कस्टमर को स्टिक रखता है आपके साथ. Hmm. एंड सो जस्ट एग्जांपल, इफ यू ओपन एनी एप्लीकेशन इन मोबाइल एप्लीकेशन, राइट, वो एप्लीकेशन बार बार हैंग हो रही है, बंद हो रही है, या फिर ओटीपीज नहीं आ रहे हैं, तो उससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है, वो ऐप एग्जिट कर जाएगा. Okay. One word to describe your design style. सो आई जस्ट थिंक ऑफ कस्टमर. कस्टमर खुश है तो मैं खुश हूँ. आई डोंट सी कि मुझे क्या पसंद है, आई जस्ट सी कि कस्टमर को क्या चाहिए. Great. What's the most exciting project you have worked on at Care on Go? So at that time that so we are building a mobile app for customers only, and that was the excitement for me because I came from a non tech background, एंड मेरे लिए Hmm. ना पूरी दुनिया नई दुनिया थी एकदम, इस टाइप के टूल्स को यूज करना, कस्टमर से बात करना. एंड when I built that app, I learned how customers think, how customer uses the app, why they stick to a product, startup, why startup grows and why startup fails. I learned at that phase. Okay, cool. In one sentence, what makes a user experience truly great? So the thing is, customer को सोचना ना पड़े कहीं पे. Hmm. That's make a user experience great. One non-tech skill that makes you a better designer or developer. Sketching. So मैं I used to do sketching a lot, and sketching करते करते मुझे काफी ideas आते थे. Doodling करते हुए I used to doodle a lot. Hmm. Yes. What's your favorite way to stay updated on design trends? So there are few websites. So there's a website called Dribble, and I used to follow a lot of industry leaders on LinkedIn. So Okay. every industry have few leaders.
And if you're planning to go in some industry, some specific, maybe it can be food industry, it can be technology, it can be in technology, it can be CRM or AI. So everyone has few leaders like so leaders like Elon Musk is a great leader, Mm, right? And you can follow them on LinkedIn and Twitter, and you can read their content. तो उनके कंटेंट से बहुत आइडियाज आते हैं आपको. great. Oh, which emerging tech trend are you most excited to explore? Which come again? Which emerging tech trend are you most excited to explore? So when I say to explore, I will choose AI, Mm, and क्योंकि AI is a new thing in the market and it's booming as well. mm. So I will choose AI. Angular JS or Node.js? Which one do you enjoy working with more? AngularJS, it's a front-end language, and I love to talk to customers, play with customers. So front-end में I have a chance to talk to customers. Mm. That's why AngularJS. So now proceeding with our last question. If you could give just one piece of career advice to every BBA, BCom student sitting here, what would it be? The career advice is डोंट वेट कि कॉलेज खत्म होगा उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, ये क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फ्रॉम टुडे ओनली. इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वट एवर ईयर इज योर्स, स्टार्ट Hmm. एक्सप्लोरिंग कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं. एंड एंड उसके बाद अपना पाथ चूज करो. एंड किसी को देख के मत चूज करो कि वो बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत पैसे कमा रहा है या नाम कमा रहा है तो हम भी Hmm. ये कर लेते हैं. Hmm. जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, एंड उसमें देखो व्हाट यू लाइक मोस्ट and then choose that Okay. path. Okay. Thank you so much, Yogesh, for such insightful session.